अभी हमने वर्जन कंट्रोल के दो टाइप, कौन से टाइप होते हैं वर्जन कंट्रोल के अभी तक जो पढ़े हैं, लोकल वर्जन कंट्रोल और सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल हमने देख लिया क्या होते हैं। थर्ड टाइप है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल। दिस इज वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल स्टेप इन। Client don't just check out the latest snapshot of the files, rather they fully mirror the repository. Rather they fully mirror the repository, including its full history. Thus, if any server dies, these systems were collaborating via that server, any of the client repository. Thus, if any server dies, and these systems are collaborating via the server, any of the client. Distributed version control system. Distributed वर्जन कंट्रोल सिस्टम अभी हमने पढ़ा, लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, डोंट जस्ट चेक आउट द लेटेस्ट स्नैपशॉट ऑफ द फाइल्स, rather they fully mirror the repository including its full history. Thus, if any server dies and these systems are collaborating via that server, any of the client repositories can be copied back to the server. Distributed में अगर कोई भी server, if any server dies, तो these systems were collaborating via that server. Any of the client repositories can be copied back up to the server to restore it. Furthermore, many of these systems deal pretty well with having several remote repositories they can work with, so you can collaborate with different groups simultaneously within the same project. समझना पड़ेगा, एक तो समझ नहीं आया है। A distributed version control system is a type of version control where the complete code base, including its full version history, is mirrored on every developer's computer. Okay, इसमें अच्छा नहीं एक्सप्लेन किया हुआ। What is true about distributed source control system? Here is what many cite as distributed. Okay. तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में मेन डिफरेंस जो है वो इनके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में एक सेंट्रल सिस्टम है जिसके अंदर सारी हमारी रिपोजिटरीज वगैरह टाइम स्टैम्प के साथ स्टोर होती हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके पास भी एक कॉपी होती है हर चीज़ की, और हमारे सर्वर में भी कॉपी होती है। तो अगर सर्वर फेल भी हो जाए तो हर पर्सनल एक क्लाइंट पे पूरा का पूरा फुल रिपोजिटरी सब कुछ होगा। तो इससे एक बेनिफिट तो ये होता है कि सबके वर्क स्टेशन में पूरा का पूरा
डेटाबेस पूरा प्रेजेंट होता है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि क्लाइंट को सर्वर को एक्सेस करने की आज सच ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपलोडिंग डाउनलोडिंग का प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। तो क्लाइंट के पास पूरा का पूरा डेटाबेस उसी के कंप्यूटर में है। तो ये जो लैग और टाइम लगता है अपलोड डाउनलोड करने में, वो सब एलिमिनेट हो जाता है। तो ये मेन बेनिफिट है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओडिन प्रोजेक्ट के गिट वर्जन में ये बोलता है कि चैप्टर 1.1 से 1.4 पढ़ना है। तो हमने पढ़ा है वे 1.1, अब हम पढ़ेंगे 1.2। कुछ गड़बड़ लग रही है। ओके, ये है गिट की एक छोटी सी हिस्ट्री। As with many great things in life, Git began with a bit of creative destruction and fiery controversy. Okay. The Linux kernel is an open source software project of a fairly large scope. ये स्टेटमेंट बोलती है कि Linux kernel, जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द Linux kernel maintenance, changes to the software were passed around as patches and archived files. In 2002, the Linux kernel project began using a proprietary distributed version control system called BitKeeper. In 2005, the relationship between the community that developed the Linux kernel and the commercial company that developed the BitKeeper broke down, and the tool's free of charge status was revoked. This prompted the Linux development community, in particular Linus Torvalds and creator of Linux, to develop their own tool based on some of the lessons they learned while using BitKeeper. Some of the goals of the new system were as follows: speed, simple design, strong support for non-linear development, fully distributed and able to handle large projects like Linux kernel efficiently. Since its birth in 2005, Git was evolved and matured to be easy and use, and yet retain these initial qualities. It's amazingly fast, it's very efficient with large projects, and it has an incredible branching system for non-linear development. Non-linear development का क्या मतलब है? इसको पढ़ना पड़ेगा, एक सेकंड। ओके, पहले पढ़ना पड़ेगा। तो nearly every version control system has some form of branching support. Branching means you diverge from the main line of development and continue to work without messing with the main line. Okay. In many VCs, this is a somewhat expensive process, often requiring you to create a new copy of a source code directory, which can take a long time for large project. Some people refer to Git branching model as its killer feature, and it certainly set Git apart in the VCS community. Why is it so special? The way Git branches is incredibly lightweight, making branching operation nearly instantaneous, and switching back and forth between branches generally just as fast. Unlike many other VCS, Git encourages workflow that branch and merge often even multiple times in a day. गिट कैसे स्टोर करता है डाटा, हमें ये समझना पड़ेगा, ये समझने के लिए कि गिट की ब्रांचिंग होती है। ओके, एज यू मे रिमेंबर व्हाट इज गिट। Git doesn't store data as a series of change sets or different, but instead as a series of snapshots. When you make a commit, Git stores a commit object that contains.
ओके, इसको मार्क करना पड़ेगा, हम डेविएट हो रहे हैं, काफ़ी डीप में जा रहा है ये, इसको बाद में समझते हैं। ऐसे करते हैं, मार्क टू रीड। तो हमने पढ़ लिया गिट के 3 टाइप, गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड, लोकल, सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री, लाइनक्स से बना तो एक कंपनी थी बिट कीपर, वो यूज़ करते थे, उनके बीच में नहीं हुआ तो फिर गिट तो कम्युनिटी ने खुद, लाइनक्स कम्युनिटी खुद अपना ही गिट वर्जन बनाया। और उसका मेन सेलिंग पॉइंट था कि भाई वो फास्ट होगा, नॉन लीनियर होगा, सिंपल डिज़ाइन होगा, फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके, गेटिंग स्टार्टेड वर्ड, अच्छा ओके, उसको समझने के लिए व्हाट इज गिट पहले पढ़ना था, तभी समझ नहीं आया। सो व्हाट इज गिट इन अ नटशेल? This is an important section to absorb because if you understand what Git is and the fundamentals of how it works, then using Git effectively will probably be much easier for you. As you learn Git, try to clear your mind to things you may know about VCS such as CVS, Subversion or Perforce. Doing so will help you avoid subtle confusion when using the tool, even though Git's user interface is fairly similar to these other VCS. Git stores and think about information in a very different way, and understanding these differences will help you avoid becoming confused while using it. Snapshots, not differences. The major difference between Git and other version control system is the way Git thinks about its data. Conceptually, most other systems store information as a list of file-based changes. These other systems think of information they store as a set of files and the changes made to each file over time. This is commonly described as delta-based version control. ठीक है, ओके, इसका डायग्राम देखते हैं। स्टोरिंग डाटा एज चेंजेस टू अ बेस वर्जन ऑफ ईच फाइल। तो डेल्टा हमें रिप्रेजेंट करता है चेंज, जैसे फाइल ही है, उसके अंदर टाइम के साथ कुछ चेंज हुआ जिसको हमने दिया डेल्टा 1। तो जो डेल्टा 1 चेंज हुआ, ये पूरी फाइल ए डेल्टा 1, ये हो गया डेल्टा 2, फाइल बी डेल्टा 1 डेल्टा 2, फाइल सी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। ओके, तो ये तो है पिक्स, नहीं पिक्स, ये तो है एक तरीके से पैचेस। तो ये था हमारा वर्जन कंट्रोल, बट ये बोल रहे हैं कि गिट ऐसे काम नहीं करता कि जो भी फाइल में चेंजेस हैं उनको स्टोर करे, बट वो स्टोर करता है स्नैपशॉट्स। तो गिट डजंट थिंक ऑफ और स्टोर इट्स डाटा दिस वे। Git instead Git thinks of its data more like a series of snapshots of a miniature file system. With Git, every time you commit or save the state of your project, Git basically takes a picture of what all your files look like at that moment and stores a reference to that snapshot. To be efficient, if files have not changed, Git doesn't store the file again. Just a link to previous identical file it is already stored. Okay, जैसे ये हमारे पास पहली फाइल है, अब फाइल ए में कोई चेंज नहीं हुआ टाइम के साथ, तो वो A1 ही है, अभी भी A1 है, फिर A2 हो गई, तो यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ। फाइल फाइल B1 B2, तो स्नैपशॉट्स और पैचेस में ये डिफरेंस है कि गिट क्या करता है, पूरी की पूरी फाइल की उस मोमेंट पे वो क्या दिख रहा है उसकी पिक्चर क्लिक कर लेता है और उसको स्टोर रखता है। तो और एफिशिएंट रहने के लिए वो क्या करता है, अगर फाइल में कुछ चेंज हुआ ही नहीं है तो वो उसे स्टोर नहीं करता फिर से। जस्ट अ लिंक टू द प्रीवियस
file it has already stored. This is an important distinction between Git and nearly all the other version control systems. It makes Git reconsider almost every aspect of version control that most other systems copied from previous generation. This makes it more like a mini file system with some incredibly powerful tools built on top of it rather than simply a VCS. We'll explore some of the benefits you gain by thinking of your data this way when we cover Git branching. In Git branching, nearly every operational is local. अभी हमने पढ़ा Git और VCS में मेरा डिफरेंस है भैया पैचेस और स्नैपशॉट्स का. अब हम पढ़ेंगे और आगे. Nearly every operational is local. Most operations in Git need only local files and resource to operate. Generally, no information is needed from another computer on your network. If you use a CVS, where most operations have network latency overhead, this aspect of Git will make you think that the cord of speed have blessed Git with unworldly powers because you have the entire history of the project right there on your local disk. For example, to browse your history from a Git doesn't need you to go to the server to get the history and display it for you. It simply reads it directly from a local database. This means you see the project history almost instantly. If you want to see the changes introduced between the current version of file and file a month ago, Git can look up the file a month ago and do a local difference calculation instead of having to either ask a remote server to do it or pull an older version of the file from remote server to do it locally. This also means that there is very little you can do if you are offline or off VPN. If you get on an airplane or a train and want to do a little work, you can commit happily until you get to a network connection to upload. If you go home and can't get your VPN client working properly, you can still work in many other systems. Doing so is either impossible or painful. In Perforce, for example, you can't do much when you aren't connected to the server in Subversion. You can edit files, but you can't commit changes to your database because your database is offline. This may not seem like a huge deal, but you may be surprised what big difference it can make. तो ये बोल रहा है कि Git के जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो सब लोकल होते हैं. लोकल मतलब वो उसी डिवाइस पे हो रहे हैं जिस पे तुम काम कर रहे हो. तो इसीलिए इसमें ऐसा लगता है कि ये एकदम स्पीड, इसके अंदर कोई लैग नहीं होता क्योंकि जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट चल रहा है वो सारी फाइल्स जो Git सॉफ्टवेयर है तुम्हारे पीसी में उसके अकॉर्डिंग उसने स्टोर कर लिया है, इंस्टेड ऑफ पूरा का पूरा क्लाउड में स्टोर कर लिया है. फिर तुम्हें कुछ काम करना है तो फेच करेगा क्लाउड से. उससे बेटर है कि पूरा लोकल सिस्टम तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर है सब कुछ. अब अगर तुम्हें 1 महीने पुरानी फाइल चाहिए तो तुम अपने पीसी के अंदर से ही उसी को ढूंढ सकते हो, मतलब यूज़ करके Git. तो तुम बेसिकली सारा काम ऑफलाइन कर सकते हो. Git has integrity का हिंदी में क्या बोलेंगे इंटेग्रिटी को? The quality of being honest and having strong moral principles. Okay. मेरा हिंदी डिक्शनरी गायब हो गई है.
बहुत ज़्यादा लैंग्वेज पे फोकस करता हूँ जब भी मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है एक भी वर्ड तुम मिस कर दोगे अगर, तो उससे काफ़ी डिफरेंस पड़ता है। क्योंकि सिर्फ पढ़ने के लिए लैंग्वेज नहीं, बट टू रेज गुड क्वेश्चंस, टू इंक्रीज योर कॉन्शियसनेस, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर तुम्हें लैंग्वेज नहीं आएगी तो तुम सही क्वेश्चंस नहीं पूछ पाओगे, तो तुम इवॉल्व नहीं होगे। जैसे कि अगर किसी को कॉन्शियसनेस का मतलब ही नहीं पता, तो उसको फिर क्या बताएंगे कि हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, पॉइंट नहीं है। इसलिए मैंने ये डिक्शनरी डाली है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला था वीडियो में कि लैंग्वेज, हमारी ओन लैंग्वेज पे हमारी ज़्यादा अच्छी कमांड होगी रादर देन इंग्लिश। तो अगर कुछ ऐसी स्टेटमेंट है जिसको तुम कन्वर्ट कर ही नहीं पा रहे हो, तुम्हें लगता है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो तुम ये एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो, कोडांड। इस पर डबल क्लिक करोगे तो अभी एक्टिव नहीं हुई। सेटिंग सेलेक्ट डिसेबल नहीं, ठीक है। अब जाके देखते हैं काम कर रही है कि नहीं। तो मैंने क्या कर रखा है, एक तो मैंने शायद गूगल डिक्शनरी डाली हुई है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, किसी भी वर्ड पर डबल क्लिक करोगे अगर तुम, तो तुम्हें उसका मीनिंग पता लग जाएगा। तो ये साथ के साथ मीनिंग देखना बेनिफिशियल है, नहीं तो तुम एक दूसरी टैब खोलोगे उसमें देखोगे, या अगर वो भी नहीं तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो एक्सटेंशन पे। और ओके, मेरी स्क्रीन शेयर में एक्सटेंशन नहीं आता है, बट साइड में जो एक्सटेंशन आइकन होते हैं उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे भी पूरा मतलब अच्छे से डिटेल मीनिंग आ जाएगा। जैसे इंटेग्रिटी है, क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, तो इसके अंदर तो ये छोटा सा दिख रहा है, पर अगर मैं मोर पे क्लिक करूँगा तो वैसे ये खुल जाएगा। बट अगर नहीं खोलना तो स्ट्रेट एक्सटेंशन पे क्लिक करो, वही वर्ड दिखेगा, बता देगा वो सब कुछ कि वो एक नाउन है, इसके सिनोनिम्स क्या हैं, सब कुछ। और मैंने हिंदी एक्सटेंशन में लगा रखी है, तो पहले तो इंग्लिश मीनिंग आता है क्योंकि दोनों डबल क्लिक से एनेबल होती हैं। तो पहले इंग्लिश आ गया, अब इसे बंद कर दो। इंटेग्रिटी का अब हिंदी मीनिंग आ रहा है, और ये है शुद्धता, सच्चापन। ओके, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग इंटायर और कंप्लीट, wholeness, entireness. Okay, moving on. तो git has integrity like wholeness. सच्चापन तो नहीं लग रहा है इस स्टेटमेंट में, बट इन जनरल wholeness, complete. Everything in git is checksummed before it is stored and is then referred to by that checksum. This means it's impossible to change the contents of any file or directory without Git knowing about it. Everything in Git is checksum before it is stored and then referred to by that checksum. This means it's impossible to change the contents of any file or directory without Git knowing about it. This functionality is built into Git at the lowest levels and is integral to its philosophy. You can't lose information in transit or get a file corruption without Git being able to detect it.
ओके एस एच ए जब हमने लाइनक्स कॉन्फ़िगर करा था तो गिट एक्सेस के लिए हमने एस एच ए की जनरेट करी थी. मैं भूल गया इसकी फुल फॉर्म. This is a 40 character string composed of hexadecimal characters and calculated. You will see these hash values all over the place in Git because it uses them so much. आई होप ये म्यूज़िक डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा. बाकी देखते हैं. ये समझ नहीं आया अच्छे से. चेक साउंड कुछ सुना तो है. चेक साउंड मीनिंग a digit representing the sum of correct digits in a piece of stored or transmitted digital data against which later comparison can be made to detect errors in data. ओके हाँ ओके वही सोचो मैं पढ़ा है हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में. चेकसम नहीं किसी ने ओडिन प्रोजेक्ट करके ये वेबसाइट छोटी सी बनाई है. प्रोजेक्ट है किसी का तो मैं देख रहा था कैसा है क्योंकि इस स्टेप के बाद मेरे को भी कोई वेबसाइट बनानी है अकॉर्डिंग टू दी टीओपी. तो लेट्स सी. गिट तो एवरीथिंग गिट के अंदर जितना भी डाटा स्टोर होने से पहले चेकसम होता है ताकि कोई गलती ना हो. मैकेनिज्म दैट गिट यूजेस फॉर दिस चेकसमिंग इज कॉल्ड SHA1 हैश. कुछ सिक्योरिटी हैंडलर समथिंग था शायद. SHA1 सिक्योर हैश एल्गोरिथम नहीं पता. You will see these hash values. Okay, Git generally only adds data when you do actions in Git. Nearly all of them only add data to Git database. इम्पॉर्टेंट बोल रहा है.
pay attention now. Here is the main thing to remember about Git if you want the rest of your learning process to go smoothly. Git has three main states that your files can reside in: modified, staged, and committed. Modified means that you have changed the file but you have not committed it to your database yet. Okay, staged means that you have marked a modified file in its current version to go into your next commit snapshot. Committed means that data is safely stored in your local database. Okay, इस पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देते हैं. 2 मिनट. Be right back.